legacy waste, dumpsite, remediation through biomining, and disposal of residual waste. Now, this news, or you can say this article, is very important because here one very interesting technique is involved that is known as biomining. I think this is very important for APSC examinations and also APSC interview perspective also. So through this article, we'll get to know that what is biomining and the news exactly where this biomining is going to be applied. Okay, let's start the discussion. So legacy waste, dumpsite remediation through biomining and disposal of residual waste. Ashok Singhal, the Minister for Housing and Urban Affairs, inaugurated the project titled Legacy Waste Dumpsite Remediation through Biomining and Disposal of Residual Waste at the dumping ground near the bank of Bugdoi River in Garmur, Jorhat. The project is a part of the efforts initiated by the government led by Dr. Himanta Biswa Sharma to make the state clean and green. So we got to know that this particular project, legacy waste dumpsite remediation for biomining and disposal of residual waste, is related to what? To make our state clean and green. And now this project being actually carried out at which place? In Jorhat. So we have to know that what is biomining and what is the main objective of this project. The main objective of this project or the aim of the project is to clear legacy waste that has been dumped at the site for the past 55 years, amounting to approximately 1.60 lakh metric tons. It is expected that within 1 year, the ground will be cleared of waste and a park will be constructed in his place. So this is a very good news, specifically to the Jorhat city peoples. And I hope जो भी लोग या गर्मोर साइड से होके जाते हैं तो now look at देखी से already that this is a huge gathering of the legacy waste. So this is a very good initiative. And also one thing is that when this waste will be cleared, a park will be constructed in its place. Now, Singhalji explained that the removal of the waste has been a long-standing demand of the local residents due to the pollution and the foul odors. কাৰণ কাষতে আপোনালোকে দেখিছে শমশান আমাৰ গড়মূৰ শমশানখন আছে जो भी लोग आप लोग वहाँ if you are familiar with Jorhat, then you know that nearby this dumping ground there is a So this is very unpleasant. There is a very unpleasant environment around this place. So there is a long demand from the local residents due to the pollution and the foul odors. Now, as we have seen, the biomining process will be used. So this biomining process will separate the organic and the plastic materials. Organic substances will be converted into fertilizers. Remember, first we separate the organic and the plastic materials, and the organic substances will be converted into fertilizers, while clean plastic matter will be sent to cement manufacturing plants to be used as fuel instead of coal. So the plastic materials, after they had been cleaned, they will be sent to the cement factory so that they can be used through the cement manufacturing process instead of coal. The remaining waste, that is about 1 to 1.5, means after this organic and the plastic one, whatever the left one, that is the remaining waste, at least around 1 to 1.5% of the total amount will be scientifically landfilled underground. So that the 1 to 1.5% of the total amount of the remaining waste after the organic waste and the plastic waste being dealt with, that those remaining amount will be scientifically landfilled underground. So they will be put underground. Now, 2-3 important technical terms we have seen. First of all, legacy waste. So let's discuss legacy waste first, then we'll come to the biomining process. So legacy waste. ये छविखনত देखिसे आपको जो दिखाई दे रहा है, I hope that आप लोगों ने एक at least for one time आपने ये देखा होगा इस type का dumping ground, right? So what is legacy waste? Legacy waste are the waste that have been collected and kept for years at some barren land
or a place dedicated for landfill. That is an area to dump solid waste. बहुत साल तक, right? Around 50 বছৰ বা তাতকৈ অধিক বছৰলৈকে আমি एटुकड़ा जगह कलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इतने साल तक आप ये सारे वेस्ट कलेक्ट करके रखते हैं, ठीक है, एक पार्टिकुलर साइट में फॉर लैंडफिल के लिए हम रखते हैं इसको, ठीक है, एन एरिया टू डंप सॉलिड वेस्ट। नाउ ये जो वेस्ट है, दिस वेस्ट कैन बी रफली ग्रुप इनटू 4 कैटेगरीज। सो दिस legacy waste can be grouped into 4 categories. What are they? First, contain and or stored waste. Contain or stored waste are waste in tanks, okay, canister and stainless steel bins. So remember, the first one is the contained or the stored waste. Second is the buried waste. Third is the contaminated soil and groundwater. And the fourth is the contaminated building materials and structure. These are the 4 different types of legacy waste. Now, biomining method has been proposed by Central Pollution Control Board for the effective disposal of the legacy waste. Got it? So ये जो biomining method है, this has been proposed by the Central Pollution Control Board, যাতে এই legacy waste বিলাক effectively dispose কৰিব পাৰি। Now, what is the impact or environmental impact of legacy waste? Legacy waste not only occupy large space, but also become a breeding ground for pathogen, flies, malodors, and generation of leachate, which may lead to water contamination also. Okay? So they also contribute to the generation of greenhouse gases and pose risks of uncontrollable fire. So बहुत problem है legacy waste. जो इतने सालों तक आप एक बहुत ज्यादा बड़ा स्पेस में आप क्या करके रखते हो, आप उसको स्टोर करके रखते हो, वहां पे रखते हो ये सारे चीज, तो इससे क्या हो सकता है? पैथोजेंस हो गया, फ्लाइस हो गया, इनका ब्रीडिंग ग्राउंड बन सकता है। वो बहुत ही ज्यादा मेल ऑर्डर और आप बोल सकते हो कि তাৰ ওচৰে পাজৰে আপোনালোকে যাব নোৱাৰা হ'ব, মেল অৰ্ডাर्स विल बी देयर एंड ऑल्सो लिसेटेड हो सकता है और उससे वाटर कंटेमिनेशन भी हो सकता है। तो these are the impact of legacy waste on environment. उसके साथ ये भी हो सकता है कि they also contribute to the generation of the greenhouse gases and pose risks of uncontrollable fire, ठीक है, এনেকুৱা ধৰণৰ জুই লাগিব পাৰে। So these are the impact, negative impact. Now, legacy waste can be dealt with, this problem of the legacy waste can be dealt with biomining. So, biomining, first of all, let's see what the Swasth Bharat Report 2020 says. According to the Swasth Bharat Report 2020, India loses over 1,250 hectares of useful land every year to dispose municipal solid waste. Further, the National Green Tribunal stated that more than 10,000 hectares of usable urban land is locked up under 3,159 legacy waste dump sites in the country, as reported by the Down to Earth, particular news journal. Okay. So Swasth Bharat Report 2020 says that India is losing around 1,250 hectares of useful land because of this legacy waste that is being generated, and you can say from the dispose of the municipal solid waste. साथ में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी स्टेट किया है कि 10,000 हेक्टर्स यूजेबल अर्बन लैंड लॉक्ड अप हो जाते हैं ये लीगेसी वेस्ट के कारण। तो दिस इज अ वेरी serious problem, right? So biomining, so we can take the help of biomining to address this. So what is biomining? Now, according to the Central Pollution Control Board, CPCB guidelines, biomining is the scientific process of excavation, treatment, segregation, and gainful utilization of aged municipal solid waste lying in dump sites, typically referred to as legacy waste. तो ठीक है, तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक क्या है, बायोमाइनिंग एक साइंटिफिक प्रोसेस है। पहले हम क्या करते हैं, एक्सकेवेट करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, और उसके बाद उसमें से जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को यूज कर सकते हैं उसको यूज करते हैं, ठीक है, ताकि ये पूरा लीगेसी वेस्ट को हम क्या कर सकते हैं,
उसका एड्रेस कर सकते हैं, वो लीगेसी वेस्ट को हम हटा सकते हैं, राइट। सो अभी हमने देखा था कि यहाँ जोरहाट में जो प्लान लिया है, ये जो प्रोजेक्ट, उसके मुताबिक क्या हो रहा है कि यहाँ जो लीगेसी वेस्ट है उसको पहले दो भाग में सेग्रीगेट करेंगे। কি আছিল? এটা আছিল organic waste and the other one is the what? Plastic waste. Organic waste will be what? बायोरिमेडिएटेड, ओके, उसको डिस्पोज कर सकते हैं, उसको उसे फर्टिलाइजर बना सकते हैं हम, ठीक है। और जो प्लास्टिक वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट में से जो प्लास्टिक मिलेगा हमें, उसे क्लीन करके सीमेंट फैक्ट्री में हम यूज कर सकते हैं। और सीमेंट फैक्ट्री में जो हम कोल यूज कर सकते हैं, उसकी जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, ये क्लीन प्लास्टिक मटेरियल्स, ठीक है। क्लीन प्लास्टिक मटेरियल्स जो भी मिलेगा हमें ये लीगेसी वेस्ट से वो यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हम बोल रहे हैं क्या है, बायोमेसी माने আমি কি বুলি কৈছো, বায়োমাইনিং ইজ দ্য সাইন্টিফিক প্রসেস অফ এক্সকেভেশন, treatment, segregation and gainful utilization of aged municipal solid waste lying in the dump site, typically referred to as the legacy waste. Got it? तो ये इससे हम gainful utilization भी कर रहे हैं। Now, simply put, it is a process of treating garbage or waste with bioorganism or natural elements like air and sunlight. ठीक है। Over the time, the biodegradable component of the waste gets decomposed through the natural process, and the remaining part, that is the non-biodegradable material, is then dealt separately. It extracts metals of economic interest from rock ores or mine waste. बुझी पाइसा? So bioorganisms और नेचुरल एलिमेंट्स, इसको यूज करके हम ये गार्बेज को ट्रीट करते हैं। इसमें से जो बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट है वो ओवर द टाइम वो तो डिग्रेड हो जाएगा, जैसे हमने देखा इस जोरहाट के केस में क्या एम है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स को हम फर्टिलाइजर बना देंगे। और जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम यूज कर सकते हैं उसको गेनफुल यूटिलाइजेशन के लिए, ठीक है। उसमें क्योंकि ऐसा मेटल्स भी हो सकता है क्या, इकोनॉमिक इंटरेस्ट मेटल लाइक रॉक ओर्स और माइन वेस्ट। नाउ ये जो पूरा प्रोसेस है, दिस प्रोसेस कंप्राइजेस ऑफ 4 स्टेप्स। फर्स्ट, एक्सकेवेशन ऑफ द लीगेसी वेस्ट, एक्सकेवेट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा लीगेसी वेस्ट को अच्छे से। देन स्टेबिलाइज द वेस्ट यूजिंग बायोरिमेडिएशन, ठीक है, और एक टेक्निकल टर्म, आई विल कम टू दिस टर्म जस्ट अ मिनट। सो स्टेबिलाइज द वेस्ट using the bioremediation, then segregation of the excavated waste, and then sustainable management and its safe disposal. So these are the 4 steps. So bioremediation अभी मैंने बोला एक, so second step में हम क्या कर रहे हैं, excavate करने के बाद जो waste है उसको bioremediation के जरिए हम क्या कर रहे हैं, स्टेबिलाइज कर रहे हैं, उसके बाद सेग्रीगेट कर रहे हैं, उसके बाद सस्टेनेबल मैनेजमेंट कर रहे हैं। So ये बायोरिमेडिएशन है A2 की। So bioremediation is a branch of biotechnology that employs the use of living organisms like microbes and bacteria in the removal of the contaminants, pollutants, and toxins from soil, water, and other environment. So bioremediation biotechnology का एक branch है जहां हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है लाइक माइक्रोब्स हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सबको हम यूज करते हैं, किस लिए, ताकि जो कॉन्टेमिनेंट्स है, जो खराब चीजें हैं, पोल्यूटेंट्स है, टॉक्सिन्स है, सॉइल वाटर और अदर एनवायरनमेंट में जो ये सब कॉन्टेमिनेंट्स हो गया, पोल्यूटेंट्स हो गया, टॉक्सिन है, इन सबको हम क्या करते हैं, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स बैक्टीरिया के जरिए हम उसको रिमूव करते हैं। तो बायोरिमेडिएशन इज ए ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी दैट एम्प्लॉयज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया इन द रिमूवल ऑफ द कॉन्टेमिनेंट्स, पोल्यूटेंट्स एंड टॉक्सिन्स फ्रॉम द सॉइल, वाटर एंड अदर एनवायरमेंट्स, ठीक है। Now, biological decomposition of this waste decreases the volume of the waste by 40%. तो ये जो डिकम्पोजिशन होगा इससे 40% तो यहीं पे खत्म हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। अब आ जाता है हम व्हाट आर द बेनिफिट्स অফ বায়োমাইনিং। এই যে যোৰহাটত যে প্ৰজেক্টটো লৈছে তাত আমি গম পাইছো বায়োমাইনিং। সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর द अपकमिंग एपीएससी एग्जामिनेशन, इवन फॉर द एपीएससी इंटरव्यू ऑल्सो, कि बायोमाइनिंग का बेनिफिट्स क्या है, क्या क्या है। Biomining has many advantages, including zero emission and leaving near zero residues, helping in reducing the soil pollution, soil contamination, and groundwater. इसका एडवांटेज बहुत है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जीरो एमिशन में काम करते हैं, राइट।
इसमें हम कोई और कार्बन रिलेटेड फ्यूल का एमिशन करते नहीं है, तो ये जीरो एमिशन है बायोमाइनिंग का सबसे पहला एडवांटेज। नेक्स्ट, ये नियर जीरो, इसका इतना हम जो है वेस्ट को इतना क्लीन कर देते हैं, उनको खत्म ही कर देते हैं, लगभग नियर जीरो रेसिड्यू तक हम पहुंच जाते हैं। और इससे सॉइल पोल्यूशन हो गया, सॉइल कंटेमिनेशन, इवन द ग्राउंड वाटर में भी जो कंटेमिनेट हो सकता था उसको हम रोक सकते हैं। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ बायो। और क्या है, सबसे पहली बात, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, इट रिड्यूसेस द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस। कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं। यहाँ पे आपने देखा हमने बायो रिमेडिएशन का यूज किया है। बायो रिमेडिएशन में हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, ये सबको यूज कर रहे हैं। यस और नो? तो इसमें कोई और जो एनर्जी है उसको यूज करने की जरूरत ही नहीं है। सो इट रिड्यूसेस, मींस बायोमाइनिंग रिड्यूसेस the greenhouse gas emissions and no energy is required for the process. Furthermore, the reclaimed land can be used for other development purposes. यहाँ आपने देखा जो हमारा जो अशोक सिंघाल जी है, उन्होंने खुद बोला है कि ये जो प्रोसेस होगा 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा बायोमाइनिंग का प्रोसेस के जरिए। जो ये लिगेसी वेस्ट है जोरहाट में गरमूर साइड के पास, उसको पूरा 1 साल के अंदर खत्म, पूरा उसको डिस्पोज हो जाएगा, कंप्लीटली उसको क्लीन कर दिया जाएगा। उसके बाद डेवलपमेंट पर्पस, जैसे कि यहाँ क्या होगा, এখন পার্ক বনোৱা যাব, एक पार्क, वन पार्क विल बी डेवलप एट दिस साइट, क्योंकि उसके पास में एक सिमेट्री है, এখন শ্মশান আছে, তাৰ মানুহবিলাকেও সেইবিলাক অৰ্ডাৰ পায়। কিন্তু কেনেকুৱা এটা বেয়া এনভাইৰনমেন্ট হৈছিলে, লোকেল পিপুলৰ পৰা সদায় কমপ্লেইন पाई থকা হৈছিলে। सो ये जो कंप्लेंट्स मिल रहा था उसके, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि 1 साल के बाद, after 1 year, when all everything will be completed, one park will be developed at this place. Got it? Then landfills are among the major source of the disease, and clearing them can help decreasing vector-borne diseases. So vector-borne disease को हम कम कर सकते हैं। And US public health list around 22 diseases that develop due to the improper handling of the solid waste. Right? Biomining is an eco-friendly method which allows us to recycle resources by extracting useful components from the waste, such as metal, compost in fertilizers, etc. तो ये नेक्स्ट टर्म आप यूज करोगे बायोमाइनिंग के लिए, क्या है, इको फ्रेंडली मेथड। यस, बायोमाइनिंग इज ए इको फ्रेंडली मेथड। क्यों? क्योंकि इट allows us to recycle the resources by extracting the useful components. ये एग्जांपल आपने देख लिया, ऑर्गेनिक वेस्ट से हम फर्टिलाइजर बना रहे हैं, और जो प्लास्टिक वेस्ट से, प्लास्टिक वेस्ट को ফুয়েল जैसे यूज कर रहे हैं सीमेंट फैक्ट्री में। तो इससे हमारा क्या मिल रहा है, আমি কি পাইছো, एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल कंपोनेंट्स फ्रॉम वेस्ट। ठीक है, वेस्ट से हमें एक्सट्रैक्ट यूजफुल कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, जैसे आपका यहाँ ये सब हो रहा है, प्लास्टिक और ये फर्टिलाइजर्स हम ये सब मिल रहा है। तो दिस इज ए वेरी good, or you can say green method, by which we can enrich the economy also, because so many dumping grounds are there, so many wastes are generated. So if we apply this biomining process, that will help in some way to grow the economy also, right? So that's why we are terming biomining as an eco-friendly method. Okay, these are the advantages. So as a civil servant aspirant, we have to talk about the challenges also. So what are the challenges of biomining? First, biomining is restricted to only biodegradable compounds and takes time to show results. One of the significant environmental risks is the risk of leakage and treatment of the acidic metal-rich solution created by the microbes. However, it can be managed if done in controlled conditions following protocols. So, पहला रिस्क ये है कि इसमें हम जो कंपाउंड्स को डिकम्पोज करते हैं वो बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड्स होना चाहिए। ठीक है, और टाइम लेते हैं ये पूरा प्रोसेस में, जैसे यहाँ 1 साल का टाइम लेंगे। ठीक है, फिर भी सही है। ठीक है, सेकेंड ये है कि इसमें लीकेजेस का रिस्क हो सकता है, और साथ में जो भी आपका एसिडिक, व्हाटएवर द एसिडिक एंड मेटल रिच सॉल्यूशन माइक्रोब्स के द्वारा क्रिएट किया गया है, वो अगर लीक हो गया तो वो एनवायरनमेंट के ऊपर बैड इंपैक्ट कर सकता है। बट इसको भी हम मैनेज कर सकते हैं इफ दिस प्रोसेस, होल प्रोसेस इज डन इन कंट्रोल कंडीशन एंड फॉलोइंग द प्रोटोकॉल्स अच्छे से फॉलो करके अगर हमने कंट्रोल कंडीशन में ये सिर्फ किया, तो इसका ये जो 2 रिस्क है इसको भी हम टैकल कर सकते हैं।
সো ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটোৱে বুজিলো ভালকৈ যদি বায়োমাইনিং প্ৰসেসটো কৰা হয় তেনলে আমাৰ এডভান্টেজে বেছি হ'ব ডিসএডভান্টেজ বহুত কম হ'ব So with this, I hope that everything is now clear to you about the recent project of legacy waste dumpsite remediation through biomining and disposal of residual waste and the technique biomining and also about the legacy waste. So still, if you have any doubt, you feel free to ask me through comment. Azilo imanute, with this, I'm ending this session. Thank you very much. Bye-bye.